Assalamu alaikum dear students. In previous class, you have studied the definition of meningitis. That means it is the inflammation of meninges, that is the covering membrane of brain and the spinal cord. After that, you have also seen the types of meningitis. There are three types of meningitis. That is, first one was the pyogenic meningitis, second one was the tuberculous meningitis, and third one was the aseptic meningitis. After that, you have also studied investigations, how meningitis is diagnosed, and the medical treatment of the meningitis. In treatment, antibiotics are prescribed, corticosteroids are given, and anticonvulsant drugs are given. Now, today's lecture, you will see the management of meningitis. Management of meningitis. As you know, जो ये childrens होते हैं, they are having photophobia and are having headache. So first point is the bright light. In management, bright light and noise should be avoided. As the patient is having photophobia and headache. In management, first point is bright light and noise should be avoided. Why bright light and noise should be avoided? Because the patient is having photophobia and also headache. In addition to this, जो ये room होता है जिसमें patient को रखते हैं, that room should be quiet. Also, side rails of the bed should be padded. Nursing care should be organized and the patient should be handled gently. Second point is the in meningitis, patients are having convulsions. So, level of consciousness. Level of consciousness should be assessed. Any change in the behavior या reflexes में जो आती है, that should be recorded. Any change in behavior or in reflexes, that should be recorded for the treatment of meningitis. Also, जो ये कन्वर्जेंस इनमें आते हैं, जो पेशेंट्स में क्या है कि इनमें सिम्टम्स में इनमें कन्वर्जेंस आते हैं, दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड. कन्वर्जेंस जो आते हैं वो उनको ऑब्जर्व करना होता है, कौन से कन्वर्जेंस आते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड. डिस्क्राइबिंग इट्स ड्यूरेशन, कितने टाइम तक रहे ये कन्वर्जेंस, एंड मूवमेंट ऑफ द इन्वॉल्व्ड पार्ट एंड ऑल्सो movement of involved part. This is the second point. Level of consciousness should be assessed. Any change in the behavior or reflexes should be recorded. As you know, इनमें convulsions आते, so convulsions should be observed and recorded. Duration of the convulsions should be recorded and movement of the part involved, that should also be recorded. Another point is the vital signs. Vital signs should be monitored continuously. Vital signs should be monitored continuously and that should be monitored frequently, including fever. As you know, patient is having fever, so vital signs में हमें क्या क्या चेक करना होता है? Fever, BP, respiration, pulse, all should be recorded.
इनमें चिल्ड्रंस में क्या है कि इनमें साइनोसिस कॉमन होती है इन नियोनेट्स में, या सेक्रीशंस होती है इन द एयर पैसेज दैट शुड बी क्लियर्ड. सेक्रीशंस in air passage that should be cleared by suction or and the and the oxygen should be administered. As you know, children are also having cyanosis, so for this purpose children are having cyanosis. For this purpose oxygen should be administered. Also इनमें secretions होती है in the air passage that should be cleared. वो clean करना होता है. Another one is the मेनली इनमें फीवर होता है, इन चिल्ड्रंस में फीवर रहता है. सो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मॉनिटर करना होता है एवरी 2 आवर्स के बाद. बॉडी टेम्परेचर शुड बी मॉनिटर्ड आफ्टर एवरी 2 आवर्स. क्यों बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा? क्योंकि इनमें फीवर रहता है. जब इनमें फीवर रहता है या हम बोल सकते हैं हाइपरपायरेक्सिया होता है, दैट शुड बी ट्रीटेड विद हाइपरपायरेक्सिया. फीवर रहता है इनमें, दैट शुड बी ट्रीटेड विद cool environment and also by tipped sponge. स्पंजिंग करनी होती है पेशेंट में टू ट्रीट द फीवर. हाइपरपायरेक्सिया ट्रीट करने के लिए पेशेंट को क्या रखना होता है? कूल एनवायरनमेंट रखना होता है पेशेंट के लिए. और इसमें स्पंजिंग करनी होती है. कौन सी स्पंजिंग करते हैं? टिपिड स्पंजिंग करते हैं इनमें. या हम इनके लिए क्या करते हैं? एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर हम इनमें एंटीपायरेटिक्स as prescribed by the doctor should be given. That should be given according to the doctor's order. Also patient should be watched. Also patient should be watched for sudden bleeding. पेशेंट को वॉच करना होता है किस लिए? फॉर सडन ब्लीडिंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्किन, फ्रॉम एनी पार्ट और स्किन रैश से. दिस इज द अनदर पॉइंट. इन एडिशन टू दिस visual changes and pupil reaction should be observed. In initial stages, intravenous fluid may be administered. इनिशियल स्टेजेस में क्या करना होता है? इंट्रावेनस फ्लूइड देना होता है. या हम पेशेंट को क्या करते हैं? नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग ये स्टार्ट करनी होती है टू सप्लाई द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट. इन एडिशन टू दीज पॉइंट्स हाइजीन शुड बी hygienic care should be provided. Hygienic care should be provided to the patient. Hygienic care में हम क्या क्या लेते हैं? आई केयर लेते हैं. नोज शुड बी क्लीन,
kept clean and moist. Oral hygiene maintain रखना होता है to prevent odor and infection. Also, physiotherapy may be required to maintain the body alignment in proper position. This is all about the management. By this, it concludes the topic.